Hi guys, welcome to my channel. A warm welcome to my channel. So in the previous video we have seen that how we can include the ID selector, element selector, and today's video is all about how we can group the selector. Suppose we have various tags in the HTML page, and how I can group all those elements and give some unique like same property to that all those selectors. Suppose I have h1 p tag, b tag, underline tag, italic tag, and I want to give some effects, same effect to those tags. So that is possible if I group those tags. If I consider with the HTML, I can group all those tags. If I relate it with the CSS, I can group the elements and give a same property. So to illustrate more about this topic, let's start with the example. I have HTML and then my head. ठीक है, तो आप लोग ने समझ गए होंगे कि अगर सेम इफेक्ट मुझे देना है डिफरेंट टैग्स में, तो मैं उस टैग्स को ग्रुप कर सकता हूँ, ग्रुप करके उसका कुछ इफेक्ट्स दे सकता हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो एक टाइटल है ग्रुपिंग। तो मैं कोई ग्रुपिंग सिलेक्टर टाइटल को क्लोज कर रहा हूँ, फिर हेड को क्लोज कर रहा हूँ, देन आई इंक्लूड बॉडी, I close the body and then close the HTML. Fine, save it, and you can see here this is my CSS folder. So within the CSS folder, I'll name it as grouping underscore selector.html. Okay, fine. Now here, suppose I'm including h1. This is tag, tag. This is the tag. Okay, this is the tag of h1. Close the h1. Fine, this is the p tag. This is the paragraph. Paragraph. Yes, tag. Fine. Okay, and let it be like this. So first, let me run this page in the browser. So I guess okay, fine. We are expected to get this output only. हम लोग को यही आउटपुट मिलेगा। एक बॉडी है, बॉडी के अंदर h1 है, एक पैराग्राफ टैग है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्टर यूज करेंगे। तो ग्रुपिंग सेलेक्टर के लिए लेट्स सी विद द इंटरनल सीएसएस। आप लोग ने पहले भी देखा है, मैं दो तरह से दिखा रहा हूँ, इंटरनल सीएसएस यूज करके भी दिखा रहा हूँ, एक्सटर्नल भी दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट लेट मी इंक्लूड internal CSS. So here what I can do, suppose I have h1. Okay, this is h1 and I want the color green, and save it. I'll go to the browser and F5. You can see here the H1 effect is the text color is green. Now if I want the same effect to P, what I'll do, so I can again like I can give a separate portion or separate part for the P tag, right? तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, अलग अलग करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि इट्स वर्किंग प्रॉपरली, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल इंक्रीज द लाइन ऑफ codes. If I increase the line of codes, the execution time will take more time, and it will be it's highly recommended. It's a good practice if you reduce your line of codes, right? So for that, we can use the concept of grouping selector. Only in grouping selector, what we need to do, we need to use the comma. So h1 comma and p. Fine. So now I have h1 and p tag with the color green. I'll save it. I'll go to the browser and then F5. You can see here I'm refreshing it a number of times. It will have the same effect. So this is nothing but grouping selector. Grouping selector. Okay. So this type of grouping selector we can do it. Suppose now I want this p tag to be
text align center. So that I can do separately. Fine. I'll save it and then I'll go to the browser and then F5. So here you can see I have this is the concept, this is the example of grouping selector. Fine, this color green and only for p tag I am including text align. तो मैंने यहाँ पे grouping selector का concept यूज किया, यहाँ पे normal element selector या फिर internal CSS का जो मैंने example दिखाया था तो वो simple है. तो यहाँ पे मैं group भी कर रहा हूँ एंड मतलब यहाँ पे मैंने ग्रुप किया है. ग्रुपिंग सिलेक्टर का एग्जांपल है यहाँ पे नॉर्मल एलिमेंट सिलेक्टर या फिर जो इंटरनल सीएसएस का जो एग्जांपल है वो इंक्लूड किया हूँ. So you can distinguish. So suppose you have n tags in your HTML part, and you want to give some same effect to all those. So you can use only uh, this. You can include all those tags and then group it. One more option is there that we can use the star symbol. We'll see this selector in the upcoming video. So now this is the internal CSS. Now let me include now let me see with the external. So link rel style sheet. Oops. Link rel style sheet href. Okay, href is equal to grouping underscore selector dot css. Fine, and close it. Let me save it. So I need to create one more file. So here suppose h1 comma p. I'll give some suppose. Let me remove this part. So now internal, or I can do one thing. For internal, I'm giving the color, the effect color green. Now in external, I am including text align center. Fine. So let me save it. Using selector dot css. Fine. This is my grouping underscore selector dot css. It needs to be same. The file name should be same. यहाँ पे फाइल नेम सेम होना चाहिए तभी वो वर्क करेगा. grouping underscore selector dot css and here also grouping underscore selector. So I am saving it. I'll go to the browser and then F5. तो आप लोग देख सकते हो जो ये ग्रीन कलर आ रहा है वो इंटरनल सीएसएस के इफेक्ट के कारण, और इंटरनल सीएसएस में मैंने ग्रुपिंग सेलेक्टर कॉन्सेप्ट यूज किया है जहाँ पे टेक्स्ट कलर का ग्रीन है, और एक्सटर्नल में मैंने क्या किया है, एक्सटर्नल में मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है. तो लाइक दिस आई कैन इंक्लूड few more tags. This is the bold tag. I'll close the B tag. I'll include the italic. This is the italic tag. Okay. And fine. So let me save it and put the browser. Perfect. So right now you can see here is the board. This is the italic tag. So now I can give some effects. So suppose here in let me show you with the external, right? In external CSS. Suppose here I can give b comma I, that is the tags that we are included in HTML. ये b और I जो सिलेक्टर है ना CSS में, ये क्या है, यहाँ पे ये टैग्स है HTML बॉडी के अंदर. देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे b टैग है, यहाँ पे I टैग है. तो वही सेम चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, b एंड I. तो अब मैं फिर यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं सोचिए मैं कुछ कलर दे रहा हूँ रेड. फाइन. सेव करके मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया. ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है. एंडेड विद सेमीकोलन, सेमीकोलन एंड कर रहा हूँ और फिर मैं उसको सेव कर दे रहा हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास और दो टैग्स मैंने इंक्लूड किया था बाद में, बी टैग एंड आई टैग. उसी को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक्सटर्नल सीएसएस में. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने बी टैग और आई टैग है, तो मैंने इसको यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्टर से कंसेप्ट यूज किया है. तो मैं दोनों को ग्रुप कर रहा हूँ
बी और आई का टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगा और उसका कलर रेड रहेगा। फाइन। तो मैं अभी ब्राउजर में जाऊंगा एंड रिफ्रेश करूंगा F5। सो आप लोग को पहले ही पता था कि इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है कि बी अंडरलाइन टैग को मैंने ये टेक्स्ट सेंटर वाला इफेक्ट यूज नहीं कर सकता हूँ। मैं पहले भी एक बार आप लोग को दिखाया था और आप मैं तभी भी मैंने शो कराया था कि जब फॉर B tag, I tag, I can use the effect of text align. I need to use something else that I'll show in the upcoming videos. So fine, like this I can use this effect. This is all about grouping selector. I have shown you the grouping selector. मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्टर दिखाया है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस दोनों यूज करके। मेरे पास 4 टैग है। पहला 2 टैग्स मैंने इंटरनल सीएसएस यूज करके दिखाया है और रिमेनिंग जो टैग्स है वो मैं एक्सटर्नल सीएसएस यूज करके दिखाया हूँ। So I guess you have cleared your doubt। आप लोग का जो भी डाउट्स है आई गेस क्लियर हो गया ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो मैं अपकमिंग वीडियोस में मैं दिखाऊंगा कैसे स्पेसिफिक क्लास को मैं इफेक्ट दे सकता हूँ। और जो मैंने इनिशियली बोला था इस वीडियो में कि सोचिए मेरे पास 10 टैग्स है और 10 टैग्स को ही मैं सेम कलर दूंगा। तो फिर मैं ऐसे ग्रुपिंग सेलेक्टर थोड़ी करता रहूंगा। सोचिए मुझे ये 4 टैग्स है उसमें मैं सेपरेट विद कॉमा करते रहूंगा क्या, H1 कॉमा P कॉमा B कॉमा I। नो, इट हैज सम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इसका एक सॉल्यूशन है। तो मैं वो मैं जो नेक्स्ट वीडियोस में है वो मैं दिखाऊंगा। ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। डू वेल इन योर फ्यूचर। बाय।